Hello and welcome to Stripe Dialogue again. We have today with us Gen Raj Shukla, former Army commander and member UPSC. We go a long way back when we were colonels together in this Indian Army, and we actually did the study on theatre command, which possibly is now the base study upon which we are actually evolving our various models of so-called theatre commands. Welcome to you, Gen Raj Shukla, to our platform. Thank you very much, sir. Thank you very much for the opportunity. And just let me say briefly, not only do I value that, what shall I say, founding association greatly, because it was under your mentorship that we first took the subject so seriously and we saw how important it was. And the second point, if I may just say, one must never be disappointed. In that Yeah, same study, sir, there was a service chief who said that we don't recognize the term Chief of Defense Staff. yeah, And the absolutely, Chief of Defense Staff was ultimately created. So absolutely. these things take time, but they have a logic of their own, and I'm an optimist they will happen. Yeah, definitely. I fully endorse your views. In fact, that is going to be our thrust today. It's not going to be so much so on the nitty gritties. It will be more on the challenges and more on issues which are facing us as far as the theatre command formations are concerned. How can we get over it? Uh, Basically, I wanted to show you this so that the audience को समझ में आ जाए कि ये थिएटर कमांड्स के बारे में हम बातचीत कर क्यों रहे हैं। ये जो तस्वीर देखेंगे आप, इसमें सबसे पहली तस्वीर आपके दाहिने में है, जिसमें जनरल बिपिन रावत हैं, लांबा हैं, एडमिरल लांबा हैं और एयर एयर चीफ हैं। ये तीनों अलग अलग एक एक साथ खड़े हैं। Chief Marshal Dhanwa. हाँ, एयर चीफ मार्शल धनोआ, और इसमें बाद में ऐड हुए जनरल बिपिन रावत एज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सो आई एम ट्राइंग टू जस्ट हाईलाइट कि जो आपने बोला है कि अकेले से अब तिकेले से अब चौकेले हो गए या चार लोग हो गए हैं, तो एक देर देर हैज बीन अ पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है। अब इसमें और सुधार की जरूरत है, वो धीरे धीरे आएगी। जो ऊपर वाली तस्वीर है उसमें हमारे दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिख रहे हैं आपको। थोड़ा-सा चेहरे पे हँसी दिख रही है कुछ लोगों के। तो मेरा ये जो सिलेक्शन था पिक्चर का इसीलिए था कि जो जर्नी जिसमें सारे टेंस खड़े थे तीनों के तीनों, एयर मार्शल धनोआ, एयर चीफ मार्शल धनोआ, एडमिरल लांबा और जनरल बिपिन रावत, वहाँ से थोड़ी-सी मुस्कुराहट आई अगर आप देखोगे। मनोज नारायण और बाकी जो चीफ्स हैं, भदौरिया जी हैं और जनरल बिपिन रावत द चीफ ऑफ स्टाफ एंड अ, अब जो फोटोज आ रही हैं थोड़ा सा मुस्कुराहट बढ़ रही है। लेट्स होप दिस मुस्कुराहट जो है वो आगे चल करके हमको कुछ और पॉजिटिव स्टेप्स दिखाए। तो सीधे हम अपने इस डिस्कशन सेशन पे आते हैं। इसके बाद मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, अभी कुछ दिन पहले जनरल अनिल चौहान ने एक टॉक दी थी यूएसआई में, और उसके टॉक के आई थिंक जून 24 या 25 की टॉक थी। उसके तुरंत अगले दिन ही एक आर्टिकल भरत कर्नाड के साथ आया। तो उस आर्टिकल को पढ़ करके मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए, जब हम लोगों ने 2006 में ये स्टडी करी थी एक साथ, जिसमें कि हमने सारे चीफ्स को भी इंटरव्यू किया था। और एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट जो मैंने आपको अपने इंटरव्यू के बाद आपको दी थी, और आपने उसको इतना उछाला कि वो पूरी इंडियन आर्मी में फेमस हो गया। द थ्री हेडेड ब्रह्मा इज डूइंग सो वेल, वेयर इज द नीड टू चेंज इट। I think if you remember, this was the opening remark of yours in the presentation to the commander conference को जो presentation दी थी, और वो अपने आप में एक लैंडमार्क presentation थी। तो आप भरत कर्नाड के जो पूरे आर्टिकल को किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि वो हमें एक समझ लीजिए आशावादी नहीं लग रही है। जो आर्टिकल है वो कहीं न कहीं हमें डिसहार्टन कर रहा है। आपके कमेंट्स? I am far more optimistic about this whole business than Mr. Bharat Karna. And I'll give you reasons for this. Uh, and here I would like to make one point, though theatre commands are important, एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, बट जिस थिएटर कमांड्स का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये 1990s का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद या उसके तत्पश्चात राष्ट्रीय सुरक्षा में बहुत गहरा बदलाव हुआ है। नेशनल सिक्योरिटी हैज ट्रांसफॉर्म्ड। सो टुडे
मेरा ये मानना है that theater commands are just one spoke in this larger wheel of strategic military transformation. बहुत और चीजें हैं जो हुई हैं और हमको भी करना पड़े. तो the basic point that I wish to make is that if we are to meet the challenges and opportunities that line our national security path, or in order to do so, there is a comprehensive national security makeover which is already happening. मैं आपको बताता हूँ 3-4 चीजें सर जो इतनी significant हैं. The creation of the CDS DMA alone. I was a member of the committee as DG Perspective Planning, which went into the creation of the CDS DMA, and I can tell you कि जो CDS DMA जिसकी कल्पना हमने की है, that is even more powerful than Barry Goldwater Nichols. और ये मैं बहुत I'm making a responsible statement. Okay. The aim of CDS DMA is to drive comprehensive change through the national security system. It is wide change. अब देखिए उसके वजह से क्या हुआ है. These services have got their legitimate voice in strategic policy making. ये तो मैंने I witnessed this as the army commander. We today have a voice on a wide range of issues. ये आप देखिए how defense is coming out of the shadows of foreign policy. ये मेरा statement नहीं है. Many others have made this statement. I've heard the Honorable Home Minister make this statement. Okay. Look at the new normals in our strategic outlook. जो बालाकोट आप देख लीजिए, कैलाश देख लीजिए, operational rebalancing जो हुआ है. These are very, very significant developments. Make in India आप देख लीजिए. Make in India में CDS, service chiefs वगैरह सबका हाथ है. And it is real transformation. I'll give you एक मैं मिसाल देता हूँ आपको. ये जो अभी 2 डील्स हुई हैं, MQ-9B Predator डील में जो एक उसका एक डेजिग्नेशन किट बन रहा है, that is being made by an Indian startup. Tata and Airbus is going to challenge the monopoly of HAL. अब इन सब चीजों की भी हम बात करते थे, कभी हुआ नहीं था. So these are the big changes and they are part of this larger national security makeover. अब इसमें आपको मैं 2 चीजें बताऊं सर, why is it so important? This larger national security makeover. Because one is because of China, the changed strategic circumstance. जो China का economic zoom है और military gap है, we all know what it is. दूसरा हमें ये भी गौर करना है सर कि जो अभी this transition that we make to a विकसित भारत or whatever people say a विश्व गुरु. So today our economy is $3 trillion. 2045 तक ये $35 trillion होगी. तो इसके अनुसार the character and profile of the military will also have to change. That's right. So That's right. sector commands एक हिस्सा है और our ultimate aim is to make जो आज ये siloed structures हैं services के, to integrate them into an integrated combat enterprise. अब मैं आप एक और छोटी बात कहता हूं, which is joint, which is technologically enabled, which is optimized, which is ready. अब मैं सर ये आप you will understand it better than me. Yes, there are mere one word descriptors, but हमने देख लिया jointness होने में 30 साल लगते हैं, technological enabled में 30 साल लगेंगे. Ready, just see sir, Russia was labeled as this great grey zone instrument, second most powerful army in the world. What happened? It proved to be unready. जो हमारा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, अब जनरल रावत से सर बात होती थी, वो कहते थे 40i बहुत है. उस समय हम भी सोचते थे. यूक्रेन ने दिखा दिया शायद 90i भी कम पड़े. 90i भी कम पड़े. Americans are scourging for artillery ammunition all over the world. So ये jointness is just one part of the challenge. ये सारी जो चीजें हैं ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने करनी है. So we, and the point that I wish to make is जो मिलिट्री है उसके सामने क्या अब चुनौती है. ये this larger national security makeover जो हो रहा है, how do we tight fit into it? Jointness is one part of it. We have to be in lockstep with India's growing weight and influence. ये बड़ा मुद्दा है. अभी चैलेंज क्या है थिएटर कमांड में, उसके अलग से हम बात कर सकते हैं. बट एक चीज मैं बताना चाहता हूं बस. जस्ट सी सर हाउ वी आर स्टेपिंग अप आवर एम्बिशंस एल्सवेयर. हम ग्रीन
हाइड्रोजन में हम नंबर 1 होने की बात करते हैं, हम मिलेट्स में नंबर 1 होने की बात करते हैं. Look what we have done in the digital public infrastructure. Today we are partnering with US in 50 countries. Vaccine. तो नेशनल सिक्योरिटी में why are we not ambitious enough? क्योंकि हमारी वो 70 साल की आदत पड़ी है. We have to change that. This is a very different India. और अगर हम नेशनल सिक्योरिटी में, आई एम नॉट सेइंग दैट वी जैकबूट अराउंड द वर्ल्ड, बट in a calibrated, thoughtful manner, if we get more ambitious, that should drive this change. Now we have to see the consequences of, or the payoffs from changing and the consequences of not. तो ये जो लड़ाई है, ये status quoism और change के बारे में. It is not so much about theater commands. It is about status quoism and change. और इस मुद्दे पर सर हम बात कर सकते हैं, but I just thought this was the opening premise that we could make. ओके, आई थिंक यू हिट द नेल ऑन द हेड. आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि ये लड़ाई जो है एक फ्यूचरिस्टिक एम्स को ध्यान में रखते हुए है कि इंडिया आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल में कहाँ पर होगा और उसको सिक्योर करने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी. उसमें Securing India's rise, securing Yes. India's rise. that is the major issue which people are possibly not understanding. सारों के अंदर जो नाक के सामने तक देखने की वो जो आदत है हमारी, वो जा नहीं बिल्कुल रही है. सर, बिल्कुल. वो आगे नहीं जा रही है. अब आप सोचिए कि हम लोगों ने 2006 में इस तरह की कल्पना की थी. याद है आपने, हमने कुछ कमांड बिल्कुल. बनाई थी जो कि एक्सटेंड Yes. कर रही थी बियॉन्ड अफगानिस्तान. They were बिल्कुल, और extending वही होना beyond. चाहिए. जब मैं अभी भी मैं उसी नजरिए पे कायम हूँ, and I will talk about that. या सो मेरा जो अगला सवाल आपसे ये है कि ये जो चेंज की जो हम बात कर रहे हैं, जो बदलाव की जो हम बात कर रहे हैं, उसके कुछ स्पेसिफिक कारण बता सकते हैं. एक तो हमने बताया कि भाई हमारा लॉन्ग टर्म एम ये होगा. कुछ लोअर लेवल पे जो रीजंस हैं व्हाई वी वांट टू गो इन फॉर जॉइंटनेस एट द हायर लेवल, उसके बारे में कुछ बताइए जरा. और चैलेंजेस क्या हो रहे हैं हमारे सामने इसको बनाने में, इसको जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको चेंज करने में क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, बोथ सिविल मिलिट्री लेवल पर और इंटर सर्विस लेवल पे और इंट्रा सर्विस लेवल, तीनों लेवल पे. मैं आपको दो चैलेंजेस, या अच्छा उससे पहले सर लेट्स डू अ कंपैरिजन विद यूएसए, सो दैट विल सी हाउ द यूएस इवॉल्व्ड एंड वेयर आर वी. सो वेरी ऑब्जेक्टिवली इट विल टेल अस वेयर वी आर. मेरा मानना ये है, टुडे वी हैव गॉट अ सीडीएस. It is like what the Americans had, a permanent chairman of their Joint Chiefs of Staff in 1949. 49, that's right. तो हमें ये रास्ता नापना है. अभी रास्ता, इसके जो बेंचमार्क्स थे क्या थे सर? Once Barry Goldwater Nichols came, हम सब उसके बारे में जानते हैं. 1986. Gulf War I was coordinated jointness. Network-centric warfare began. मेरा मानना है हम we are somewhere in that area. We have begun to coordinate networks, so on. But yet we have not completely coordinated. But see, the journey we have to take, जो आपका तीसरा सवाल था, by Gulf War II, they had so perfected jointness that a Bradley commander, a tank commander could call for the fire of an F-16. Yeah. तो ये जो कहते हैं कि साहब jointness strategic है, बड़ी बात है, नहीं है. Jointness will benefit the soldier, sailor, airman in the field and the fleet. Correct. It is a strategic change which will have tactical outcomes. Correct. दूसरी, और सर अभी दुनिया, the world or the global metrics have moved far beyond. Jointmanship or integration is just one part. The world is talking of cross-pollination. The world is talking of multi-domain operations. मतलब किस कुशलता से आप स्पेस, साइबर, ईडब्ल्यू, लॉन्ग रेंज प्रिसिशन को अपने ट्रेडिशनल डोमेन्स में शामिल करेंगे. ये जो हमें पूरा ट्रांजिशन करना है डिजिटल कॉम्बैट में. आप यूक्रेन में देखिए सर, ऑफ कोर्स देयर आर दोस क्वाड्रन कंपनी बैटल्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट व्हाट इज ऑल्टरिंग द गेम इज persistent surveillance and precision. Our ordnance factories are these dumb ammunition behemoths. Precisionary लाने में, which means to marry micro explosives, micro electronics with explosives will take us 25 years. We have to begin. This is also integration. This is technological integration. ये भी हमें करना है. आजकल सर बात jointness की नहीं हो रही है, integration की नहीं हो रही है, बात हो रही है सिविल मिलिट्री फ्यूजन की.
या उसी की मैं बात कर रहा था कि वो कैसे Question that अचीव you करेंगे। would ask कि भाई why have these walls of granite between cylinders of excellence? हम्म, और इसका मैं अगर आपको बहुत एक हिंदी रूपांतर दूं, आर टेक्स्ट टेल अस सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा का मिश्रण। सो योर सेंटर्स ऑफ लर्निंग, एकेडमिया, रिसर्च, उनका आप तालमेल कीजिए अपने लक्ष्मी से, सेंटर्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन, बिजनेस, स्टार्टअप्स, बिल्कुल। and use them the business that will nurse your instruments of power। हमारे टेक्स्ट में कितना ज्ञान था और हमने क्या ये साइलो लगा के खड़े कर दिए, सिविल, मिलिट्री, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट, एकेडमिया, यहीं they have to dissolve। So यहीं पे मैं today the थोड़ा challenge is just यहीं पे not jointness, sir, it is far more। यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ा सा एनेक्डोट देना चाहता हूँ आपकी बात को वो करने के लिए। हमने जो आत्मनिर्भर का जो सेमिनार किया था, उसमें एक यंगस्टर आया था। उसकी एज होगी करीब 24-25 साल की, तुषार नाम है उसका। उसने इस तरह से बातचीत करी तो मुझे याद आया, यार हमने क्यों नहीं इस तरह से बात की जब हम यंगस्टर थे। वो बोलता है, सर डेवलपमेंट कैसे होगा, आप हमें अपने पास बुलाइए, आप मुझे डायरेक्ट कोर कमांडर के पास बुलाइए या ब्रिगेड कमांडर के पास बुलाइए, मैं वहां आपकी प्रॉब्लम देखूंगा और फिर अपने आप एक नया इनोवेशन करूंगा जो आपको आपकी लड़ाई करने में, फ्यूचर की लड़ाई करने में मदद करेगा। आई थिंक नथिंग कुड बी बेटर देन अ यंगस्टर टेलिंग समथिंग let व्हाट me इज let me reinforce this with another example। when I was army commander at track, एक स्टार्टअप को मेरे पास लाया गया, जनरल चनन लाए थे मेरे पास वो स्टार्टअप, थर्ड आईटेक नाम था। इट वाज सीईओड बाय अ लेडी, विंदा कपूर। So I was really amazed that this girl or this lady is, fighting with all MOD bureaucracies, service bureaucracies। उसमें उसको इतनी इतनी मेरे को जान लगी उसमें, that as army commander I gave 4 AONs, and then she had some problems, but I'll tell you now what is significant। some problems, she used to sometimes complain कि सर ठीक स्लो है, चीजें नहीं हो रही हैं। अभी जब प्रधानमंत्री जी वॉशिंगटन गए थे, she got a call and she was present on the technology roundtable with the honorable prime minister। what a achievement for Sir, her। prime minister, this girl, Mr. Mukesh Ambani, Anand Mahindra, NSA, and they are now getting contracts with these systems, I'm telling you। Now this is what is going to happen to startups। अगर एक स्टार्टअप को ऑर्डर मिला, 10 स्टार्टअप और, समीर जोशी एक और है जिसको हमने ऑर्डर्स दिए हैं आर्मी को। सो दीज आर लॉट, बट आई एम द फर्स्ट टू से दिस इज नॉट इनफ। टुडे वी नीड ऑर्डर्स, ऑर्डर्स एंड ऑर्डर्स। तो जैसे जो आपने एग्जांपल दिया सर, बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं, बट बहुत चीजें हमें और भी करनी है। तो मेरा ये मानना सर ये है कि jointmanship is not a one trick pony। It is not about theater commands alone। It is about a whole lot of other things now। So the ambit of jointmanship has expanded। उसका जो दायरा है वो बढ़ गया है। We need structural corrections जैसे theater commands। We need cultural corrections sir। ये जो CMF है, ये जो सोच है, ये जो talent pipelines हैं, we have to acknowledge that जिस लड़के का आपने नाम लिया या वृंदा कपूर, they are as important to this whole transformation। सबको साथ में लाना है। टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन, क्रिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, तो इनके सारे एमेलगम से जो हमारी जो कैरेक्टर और प्रोफाइल है हमारे सेनाओं का, उसमें तब्दीली आएगी। और मेरा ये भी मानना है सर, इट्स जस्ट अ हंच, आई एम नो लॉन्गर एन इनसाइडर, बट आई एम टेलिंग यू माय हंच इज that something big is going to happen। All these things are going to happen। Theater commands, 4 stars, quasi diplomatic profile। So you'll have theater command, say the northern theater commander will look at Bangladesh, he will look at Burma। That is the way things are growing। The western theater commander will look at Afghanistan, he will look at Iran, what is happening in that region। अभी हमको ये सब आप सब जानते हैं। Look how we regressed in some ways। We set up the ANC। ANC का मकसद था to make sure that our power projects across Malacca। When we got into a defensive mode, every ANC commander would come and tell us how he's defending those islands। वो तो मकसद ही नहीं था ANC का। बिल्कुल So we have to change। There will be 2 steps forward, 1 step backwards, but I remain optimist। और यहाँ 2 चीजें हो सकती हैं, जैसे we know, one is the incremental changes, the low hanging fruit, and one is the larger transformations। दोनों पे हम बात कर सकते हैं। जहाँ तक इंक्रीमेंटल चेंजेस हैं
और रेवोल्यूशनरी चेंजेस, दो तरह के चेंजेस नॉर्मली लोग बात करते हैं, या ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज जैसा कि आप बता रहे हैं। यहाँ पे मैं, क्योंकि आपने फॉरेन आर्मीज की बात करी, फॉरेन डिफेंस फोर्सेस की बात करी है, तो क्या आप कुछ इस पे रोशनी डाल सकते हैं कि जो हमारा जो मेन एडवर्सरी है चाइना, उसके साथ और हमारे साथ का जो कंपैरिजन है, नॉट इन टर्म्स ऑफ अगेन फोर्सेस, बट इन टर्म्स ऑफ preparedness, in terms of advancement, in terms of technological prowess, etc., how much more we need to do to reach that particular level? Because अभी तक हम चाइना को थोड़ा सा अंडर प्ले कर रहे हैं। अब सारे थिंक टैंक में हमने चाइना को काफ़ी मैंने देखा है कि हम उसको ठीक है, एट दी ऑपरेशनल लेवल वी विल बी एबल टू डू, हम उनका जवाब दे सकते हैं। बट जब लड़ाई लंबी हो जाती है तब कई सारी चीज़ें और सामने आती हैं, जैसा कि रसिया यूक्रेन वॉर में भी दिख रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारा जो जर्नी चल रहा है जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन की तरफ, और सो कॉल्ड नेशनल सिनर्जाइजेशन ऑफ एफर्ट टुवर्ड्स नेशनल सिक्योरिटी, अब इसको हिंदी में बोलेंगे तो जो हमारा सिनर्जी आपस में जो मेल मिलाप है जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसको नेशनल सिक्योरिटी की तरफ ले जाने में कितना हमें वक्त लगेगा, और हमारा और चाइना का गैप क्या है? देखिए, मेरा ये मानना है सर, जैसे ये जो ऑपरेशनल रीबैलेंसिंग जो हुई है अभी, इट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप। फोर्स लेवल्स, मेक, आर्मर, रिजर्व्स, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रा, बहुत बढ़िया है। बट आर competition with China is not merely along the LAC. China is making other strides. It is transiting to digital combat. Look at its long range precision, rocket force, strategic support force. They are so ambitious. Strategic support force का aim ये है to capture the entire information spectrum. So China's economic zoom and military gallop, it has to be admitted, is significant. And a thoughtful mind will appreciate the adversary realistically. तो मेरा मानना है that lag, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, are the Chinese 12 feet tall? No, they are 5 No. feet tall. But if we don't do what we should do, we make it 8 feet tall. So we have to step up the game in terms of scale, execution. This is no time now for lofty debate and exchange of ideas. जो आप लोग के ना ये जो argument है that if it ain't broken, don't fix it. Whether it is broken or not, you will come to know only when there is a conflict. तब तक तो आपका अनुमान, मेरा अनुमान है. लोग बोलते हैं कि लोग Let's see बोलते हैं what's. कि या लोग बोलते हैं ना कि आज के जनरल पिछले 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 लड़ाई के हिसाब से लड़ते हैं, और फिर जब मुंह की खाते हैं तो चाहे आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर देख लीजिए, इट वाज द सेकेंड जनरेशन व्हिच एक्चुअली चेंज द टर्न द टेबल्स। इसी तरह से So, बाकी भी जो लड़ाई है। so let me just make 2-3 points regarding China, which we should really see realistically. एक तो जो उन्होंने देखी सर, they debated for very long. The Chinese president of the NDU in 2001 said, "We have read every word that Andrew Marshall has written. We have translated all his writings." See their humility. पहले वो उन्होंने अध्ययन किया, वो Gulf War 1-2, but once they made up their mind in one fell sweep, rocket force, strategic support force, theater command, CDS, उन्होंने किया है. We have to acknowledge this. So they are far more integrated. Does this mean that they are unbeatable? Certainly not. But it also does not mean that China is a parade ground military. It is just social media fluff. If it is parade ground military, social media fluff, we shouldn't bother. But it may not be. And I'll give you 2 examples. ये क्या होता है सर, ये जो बाकी चीजों की बात हो रही है ना, ये जो structural corrections, cultural transitions, make in India, look at how it is valuable in asymmetric addressing. See China's budget, sir. It is America's defense budget is about $880 billion. China's defense budget is about say $290 billion. Ours is in the range of $85 billion. 85 billion. What we must see, sir, why is it when America's defense budget is 3 times of China, and China's defense budget is 3 times that of India, why is Beijing causing displacement anxiety in Washington, and we are not causing similar displacement anxiety in Beijing? Because we are saying, if ain't broken, don't fix it. Other changes we have to do. And I will give you one more statistic. I'm quoting the Under Secretary of R&D of the US. जो चाइना ने ये इनोवेशन और ये जो टेक्नोलॉजी सिविल मिलिट्री फ्यूजन से जो उन्होंने स्ट्रेंथ या उनका जो फायदा हुआ है, ये देखिए सर इस तरह से हुआ है.
The US Undersecretary of Defense says that from idea to combat inventorization, मतलब जब आप एक किसी टेक्नोलॉजी या कैपेसिटी के बारे में सोचते हैं, and the time you take to induct it into your वो हथियार या वो कैपेसिटी आपके ट्रुप्स के हाथ में पहुंचता है. If US today takes 17 years, China takes 7. This is the mighty US. They say if the US Navy is, loses 50% of its ships and China loses 50% of its ships today, US will take 20 years to recreate their Navy and China will take 3. तो US मान रहा है, हमको भी मानना पड़ेगा. Does that mean that China is stronger to us? Of course not. We will stand up to him along the LAC. But each step that you don't take, each change that you postpone, you kick the can down the road, you are denuding your own combat capacity. So while we are certainly not a pushover, we are not 62, even he is not 62. Okay. So that is how I see China, and therefore when you see China, all the more reason we have to step up the game. We have to step up the change. And one more thing, sir, see, your generation and my generation will relate to this. Throughout our service, we said the politician has no will. The politician today, sir, let's be honest, the politician is leading. He's saying, ye kar do, wo kar do, and we are saying, sir, thoda aur time. So today, the will is there. We, the leadership, military, civil, technological, have to introspect. And see, I also appreciate there are difficult things. I'm not saying that people are not doing. So it is collectively for all of us to make sure that things happen at a far faster pace. But I once again say, my hunch is we have laid the edifice for that national security makeover. Yes, a lot needs to be done, but things will happen. They are happening. That is my hunch. Okay, so leading from the question which you have, the comments which you have made on China, एक जो अगला सवाल जो इस पे आता है हमारे दिमाग में, वो ये है कि हम पहले बात करते थे कि पॉलिटिकल विल की कमजोरी है, इसकी वजह से सीरियस नहीं बन रहा है, इसकी वजह से हमारा जो नेशनल स्ट्रक्चर है डिफेंस का वो उतना अच्छा नहीं है जिसमें रिफॉर्म्स की जरूरत. हम खुद बोलते थे और करते नहीं थे. मेरा तो ये मानना है कि हम लिखते बहुत थे, करने का जब टाइम आता था तो हम एक दूसरे के साथ लड़ने लगते थे आपस में. क्या इस स्थिति में कुछ बदलाव आया, या फिर आप देख रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स अभी भी एक तरह से अड़ंगा लगा रहे हैं, जो कि बात कुछ दिनों पहले आई थी. ये जो सिनर्जी जो है ब्यूरोक्रेट्स और मिलिट्री के बीच में, ये भी एक मसला रहा है हमारे हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन की जो स्मूथ फंक्शनिंग में. इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मेरा मानना है सर, ये जो मसला था about the MOD being an obstacle, that has changed greatly by creation of CDS DNA, and this I saw in my last 2-3 years when I was in service. Okay. Many of these issues are now with the DNA. They happen much faster. The delegation of powers, decisions, training वगैरह में, like geosciency R-Track, I had all the powers. I was given all the support by the chief and by the CDS. We signed so many projects. अब वो सर रिवाज शुरू हुआ the year I took over, because I'll give you an example. So the Army Commander R-Track had R&D powers of 15 crores per item, unlimited. Yeah. आपको भी नहीं पता होगा, ये जनरल शमी मेहता ने शुरू किया था. We must acknowledge this. And then it died a death. I also didn't know. But because the whole environment had changed, the Prime Minister was talking, the Raksha Mantri was talking about this technology and all that. I had made a presentation to, the army had made it. General Rawat was the chief, to Raksha Mantri, and he said, go ahead with these technologies. Okay. In the first year, I could give AONs or approvals only for 7 crores. The year I was leaving, I gave approvals for 154 crores. Wow. I mean, that's the and point. Similarly, other army commanders, I mean, I would tell the CDS, tell the chief, he would say, go ahead. So many things have happened. So that the complaint we had with the civil bureaucracy, वो जो एक दो silos थे, वो खत्म हो गए. Sir, in any organization, there will still be differences. I'm not saying all is hunky-dory, but there was far more you could do than was the case in the part. And this we must acknowledge, sir, ये जो DMA है, I was a member of the committee. हम तो MOD integration की बात कर रहे थे. हमने तो DM की रचना भी नहीं की थी. DMA. So DMA, and here I would also make to one point, a lot of people, including Admiral Arun Prakash, whom I respect greatly, he says CDS has been degraded by
make him secretary. No, the CDS is powerful where he is. The secretary designation gives him those powers, which is a very Financial, enabling power. Financial. basically, basically financial and other issues, So and a other lot issues. of मिलिट्री डिप्लोमेसी में बहुत हुआ है, आत्मनिर्भरता डिफेंस में बहुत हुआ है, टेक्नोलॉजी में बहुत हुआ है. आई बिलीव मेरे समय शुरू हुआ था, मैंने कुछ सुना कि जैसे सिविलियन फैकल्टी इन आर्मी वॉर कॉलेज, दिस इज अ बिग स्टेप. So lot of these things have happened. Freedom, declassification of dissertations, ये जो हम कहते हैं low hanging fruit, ये इन चीजों में बहुत तब्दीली हुई है. But I also will agree that jointmanship is not about integrating music schools and PT schools. Jointmanship has larger objectives, so that also we have to do. लिंक टू दिस इज नाउ सिंस द सीडीएस बन गया है, सीडीएस को एक सेक्रेटरियल पावर भी मिल गए हैं जिसमें कि बहुत फाइनेंशियल पावर्स भी हैं और बाकी जो डे टू डे एचआर इश्यूज हैं उसके ऊपर भी उनके पावर्स हैं. यहाँ पर एक और डिबेट चल रहा है सीडीएस के ऊपर, वो ये है कि अगर हम थिएटर कमांड्स की रचना करेंगे जिस तरह से बातचीत हो रही है तो उसको ऑपरेशनल पावर देने की ज़रूरत है एंड द डिफेंस ऑफ इंडिया शुड शिफ्ट फ्रॉम सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी से सीडीएस के पास जाना चाहिए. इसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये जो गवर्नमेंट के जितने ऑर्डर्स निकले थे सर, उसको आप जब ये सीडीएस डीएमए स्थापित हुआ था, तो दैट यू आर एब्सोल्युटली राइट. It does not say that the operational mandate has transferred to the CDS, but that is the mere letter. In spirit, the way the CDS has been created, in my view, he is the final arbiter on all matters military, on all matters. The way it had started working, you could see it. Promotion boards go to the CDS. Most other files go to CDS. Foreign tours go to CDS. Apart from a few things which go to Secretary of Defense, which are administrative in nature. And let us see how it will pan out. So once theater commands get, let's also see how it's in US. It's a misnomer in my view that the chairman, Joint Chiefs of Staff has no operational role. No, there it is laid down between the theater commanders and the Secretary of Defense, which is the political boss. Political head. The chairman, Joint Chiefs of Staff is woven into it. Whose face do you see most? Mark Milley. Tell me one operational decision where Mark Milley has not been taken into account. So even in that, it is optional. And the way it works practically is that the chairman, Joint Chiefs of Staff is truly woven into operational decision making. And, these experiments have been done both in UK and USA. Ki kitna karna chahiye. Now we should not go to the other extreme. In UK, they made the CDS so powerful that the service chief could not visit Iraq in Afghanistan. So that is also, service chiefs also have to be given their due. This calibration will come practically once the theater commands us. But of course, the final operational decisions are of the political bosses. That is the principle of civilian control. But CDS की भूमिका श्रेष्ठ होगी इसमें, मेरा ये मानना है. मैं आपसे एक और सवाल पूछने वाला था लेकिन मैं उसको पूछूंगा नहीं क्योंकि उसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल ओवरटोन्स ज़्यादा हैं. सिर्फ एक इनडायरेक्टली आपसे पूछना चाहता हूं कि जो आपने बात कही है सीडीएस की वो बिल्कुल सही है. क्या ये पर्सनालिटी ड्रिवन भी होगी इन फ्यूचर? क्योंकि हमारे यहाँ जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो अमेरिका में होता है और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इंडिया में, दोनों में थोड़ा सा अंतर है इन टर्म्स ऑफ कि फंक्शन कैसे करते हैं. वो थोड़ा ज़्यादा डिपेंडेंट है एडवाइजरी कैपेसिटी में लोअर लेवल्स पर. तो कहीं ये पर्सनालिटी की वजह से भी तो ये डिफरेंस सामने लोगों को नहीं दिखते हैं. डिफेंस सेक्रेटरी हो गया या सीडीएस हो गया या एनएसए हो गया, ये 3-4 लोग हैं जो इस डिसीजन में साथ रहेंगे. कोई भी अगर ऑपरेशनल डिसीजन लेनी हो तो कहीं पर्सनालिटी का फर्क तो नहीं आएगा इसमें हमारे 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 कॉन्टेक्स्ट में. मैं एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं कर. तो आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा सर. तो इसमें दो चीजें मैं बताना चाहूंगा. सी टुडे सर, नेशनल सिक्योरिटी हैज बिकम सो कॉम्प्लेक्स एज आई एंड यू नो that it is not confined to the military. So there is military, there is wider defense where the secretary, where the defense secretary steps in. And many of these issues, like I said, emerging technologies, abhi jo innovation bridge ki baat ho rahi hai, they go to the NSCS, they go to the NSA because they need larger coordination.
So while personalities will always matter, I think in our setup, the way the national security structures have matured or are maturing, what is the role of the defense secretary? Very important in administration, in driving the whole business of DPSUs, military industrial complex, IDEX, जो innovation उनके under में है. CDS, as we've just discussed, has its own salience. So does the NSA. So I think in a mature setup, personalities learn how to interface and interact with each other. And what I saw after the CDS DMA was set up, people expected great conflict. I have not seen that conflict. I think it is working pretty well. This does not mean that this challenge, which I can come to a little later, जो हमें अभी रास्ता तय करना है, that is huge. There are huge opportunities and huge challenges. ये सबको मिलके करना है. क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है इस पे हम तकरीबन 30-35 मिनट बातचीत करते हैं और उसके बाद कुछ सवाल जवाब भी लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सवाल जवाब भी आ गए हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पर. मैं आखिरी सवाल पूछूंगा क्योंकि हमारी जो ओपनिंग थीम वही थी. तो आपसे ये मैं पूछना चाहूँगा कि फ्यूचर में जो जो भी ये बिग बिग चेंज की जो आप बात कर रहे थे, उस बिग चेंज में हमारे जो इंडिया के पर्सपेक्टिव से जो थिएटर कमांड्स का जो स्वरूप आने वाला है, उसका कुछ मोटा-मोटा रेखा चित्र बना सकते हैं आप क्या? आई मीन, कैन यू गिव अ आउटलाइन ऑफ द ओवरऑल थिंग सो दैट पीपल गो विद सम काइंड ऑफ आइडिया, कुछ आइडिया के साथ जाएँ कि हाँ भाई, थिएटर कमांड जो फ्यूचर में आएँगे आपके आपके अनुसार. कई मॉडल्स फ्लोट कर रहे हैं, 2 मॉडल मेरे पास भी पड़े हुए हैं, मैं उनको भी दिखा सकता हूँ, लेकिन आप अपने विचार से ज़रा बताइए कि और फिर मैं उन 2 मॉडल्स पे भी आपके कमेंट्स लेता हूँ. बिल्कुल सर. तो इससे पहले बस मैं 30 सेकंड्स लूंगा. ये जो इंक्रीमेंटल चेंजेस की मैं बात करता हूँ, सी हाउ दे कैन बी सिग्निफिकेंट. मेरा ये मानना है, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जहां हम ये शुरुआत करते हैं जॉइंटमैनशिप की, द डिवीजन शुड बी इंटीग्रेटेड. सो व्हाट डज दैट मीन? यू हैव ईच ऑफ दीज डिविजन जिसका हेड कैन बी फ्रॉम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बट उसके पूरा जो करिकुलम है, वो इंस्ट्रक्टर्स हैं, दे शुड बी जॉइंट. दे शुड नो लॉन्गर बी अ नेवी, एयरफोर्स एंड अलग-अलग साइलोज में नहीं होने चाहिए. बिल्कुल. हमारे टाइम पे सब अलग-अलग होते थे. Exactly. And what should happen, sir? We should have a cadre of officers who are bedrocked in single service efficiencies, schooled in integrated combat, but have a wide angle view of national security. Yeah. This has to be built up over 40 years. ये बड़ी लोडेड स्टेटमेंट बताई आपने. ये बड़ी लोडेड स्टेटमेंट बताई, जरा हिंदी में लोगों को समझाइए. हिंदी में ये है सर कि जो आपकी बेसिक बुनियादी वो हैं, as a gunner, as an infantry officer, as an armored corps, you have to be very good in your initial years. As you grow, you have to school in integrated combat. कि वो ब्रैडली कमांडर F-16 को कैसे लाएगा, ड्रोन्स कैसे शामिल करेंगे. आज पूरा डेटा की लड़ाई हो रही है, एल्गोरिथम्स कैसे डेवलप होंगे. इंटीग्रेटेड कॉम्बैट एंड अ वाइड एंगल व्यू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी. No 3-star today can be just a good gunner. He has to have a wide angle view. इसमें सिर्फ 2 चीजें और हैं. General Rajiv Tiwari was the Commandant Army War College when we made a पूरा रेखा चित्र जिसने आपने बोला how to make the higher command course joint in time frames. And I would like to share here one thing because आपने को ऐसी नर्व को छू दिया है जिसको कि मुझे कमेंट करना ही पड़ेगा. जनरल तिवारी के बाद मैं आया था वॉर कॉलेज में एज कमांडेंट, और मुझे इस बात का बिल्कुल कोई इल्म ही नहीं है कि इस तरह का कुछ हुआ था. नहीं तो सर जॉइंट हाई कमांड कोर्स का पूरा रेखा चित्र जनरल सोनी, जनरल राजीव तिवारी एंड वी हैड डन इट, कैन बी इंप्लीमेंटेड स्ट्रेट अवे. मेरा ये मानना है जॉइंट हाई कमांड कोर्स. तो नहीं तो मैं जरूर इस बात को आगे ले जाता. तो सर अभी आप 4 साल में इतना ही कर दें, स्टाफ कॉलेज को इंटीग्रेट कर दें और ये जॉइंट हायर कमांड कोर्स कर दें. ये हो गई छोटी बातें. अब जो बड़ी बातें थी सर, नाउ दिस इज जस्ट माय व्यू, आई हैव नो क्लू व्हाट इज हैपनिंग. और जो आपने बोला उन्हें लाइटर वेन, सर ये जो मॉडल्स हैं ये तो 170 बन चुके हैं. अब मैं कहता हूं उनमें से एक को लागू कर दो जो आपको पसंद है. द टाइम इज टू एग्जीक्यूट whichever, but I have one, and my view is 2 adversary specific theater commands, one looking at China, one looking at Pakistan, and one looking to secure our maritime aspirations. यहाँ मैं एक और बात करूँगा सर. दो I am an army officer,
there is a big danger of a strategic squeeze from the land and the seas. So we have to create this maritime command post haste. And in my That's very view, important. they have to be four star not because of rank, in terms of their status, outlook. They should have this quasi diplomatic profile. We have to start thinking big. Then what we need even more urgently than these three theater commands is a multi-domain command today, which takes care of things like EW, space, cyber. ये सर अभी कहने वाली बातें नहीं है. US, the only command which it has upgraded to combatant command status in recent years is space. Yes. Look at the rocket force. It is a separate service. So एक ये multi-domain command where all these emerging technologies are woven into the traditional domains. And my other view is, sir, we need joint thinking, joint doctrines. So our track should become joint. You look at long-term strategic military futures. The USA has created an Army Futures Command to drive innovations to the field. Our track can be given this task. और साथ साथ देखिए सर, दो चीजें मैं आपको और बताता हूं which are so significant. CENTCOM, US CENTCOM last month has appointed an advisor on AI, robotics, and cloud computing. Who's that advisor? Dr. Andrew Moore. Who is Dr. Andrew Moore? He is Director, Google Cloud AI. तो साथ साथ जब हम ये थिएटर कमांड्स क्रिएट कर रहे हैं, we have to get this technological expertise, technology advisor, diplomatic advisor. We need a chief data officer in MOD. MOD needs to become cross-pollinated. In other ministries, there is lateral induction. MOD also needs to become cross-pollinated. So these three theaters, our track becoming joint for thinking, future strategy planning, and this kind of stuff. And what I told you about CENTCOM, this technology advisor in CENTCOM. So all these things need to happen as part of the larger transformations. 2-3 things more, sir, in my view. Now this can take 10 years, 15 years, but it will happen. The CISC must be 4-star, as it has happened in other places, so that he deals with the service chiefs on a day-to-day basis, leaving the CDS free to operate in the strategic military domain. The CDS must sit on the boards of all 3 stars. Only then will the language become joint. नहीं तो ये single service languages शुरू होंगी. This has happened in most countries. And as part of that larger thing I spoke about civil military fusion, we have to get civil faculty. ये हो रही हैं सर चीजें. IITs के साथ तालमेल, civil military. ये तो हो रहा है. Private sector coming into combat. Elon Musk Starlink terminals, Peter Thiel's algorithms, Microsoft. ये हो रहा है. जो मैंने पूरी precisionary की बात की, persistent surveillance. Why can't we look at a AI-enabled northern theater? Just as we look at creation of structural commands, why not a tri-service cloud which will add value to these theater commands? So it is a comprehensive transformation that we need. और मैंने आपको छोटा सा ब्यौरा दिया कि what are the baby steps and what are the larger transformations. Okay, so I think we've had a very productive discussion, and because we also have to take a lot of questions. In fact, काफ़ी सवाल हो गए हैं जिसमें कि और जो बातें हम करने वाले हैं वो शायद आंसर हो जाएंगी. तो हम सवाल जवाब लेंगे इस समय. सबसे पहले जो सवाल है, इनफैक्ट इट इज़ नॉट अ सवाल, it is a comment on your outlook of securing India is underlying factor for new interpretation of national security perspective. But we are saying कि हम इससे और आगे जाएं, securing Indian interest की तरफ जाएं. अब threats तो हो गई हैं. अब इसके बाद का जो हमारा जर्नी होना चाहिए वो securing Indian interest, जो हमारी काबिलियत को मैच, मतलब इंटरेस्ट को हमारी काबिलियत मैच करनी चाहिए. That is what is there was a very good phrase, sir, if I may just say it. Yeah. The challenge is to calibrate our economic flight with our strategic stride. दोनों में तालमेल. I think बहुत ही बढ़िया वो है. अच्छा, next, how would say an army officer in charge of a theater
execute operations in naval airspace domains. He'll be advised by a junior from the other service. Will the role of service chiefs be ceremonial? अब ये थोड़ा सा ये पुराना इशू इन्होंने रेज किया है, इसके ऊपर आप जल्दी से दो कमेंट दे सकते हैं। तो सवाल बहुत वाजिब है, बट मैं आपको जवाब देता हूँ. सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग डीएसएससी बिकम जॉइंट, हायर कमांड बिकम जॉइंट. तो वो जो आप ऑफिसर्स पैदा करेंगे, इवन आफ्टर अ व्हाइल, इफ नॉर्दर्न थिएटर में देयर इज अ नेवल ऑफिसर, he has come, he has been G1 somewhere, he has attended the army high command course, he has a wide angled view of security, and he has, उसके नीचे they are those component commanders, 3 stars हैं उसको उस एडवाइस देने के लिए. Let me also tell you, sir, when America was fighting its 2 major land conflicts, who was the chairman, Joint Chiefs of Staff? Admiral Mike Mullen. Not a murmur. So the worry is genuine, but if we address it with wisdom, विवेक के साथ अगर हम इस चैलेंज का सामना करें, it can be addressed. यहाँ पर मैं एक छोटा सा एडवाइस भी देना चाहता हूँ। मैंने क्यों बोला कि ये एक पुरानी धारणा जो थी अभी तक प्रिवेल कर रही है। मैंने कुछ एक इंटरव्यू लिया था बहुत ही ऊंचे लेवल के ऑफिसर का, मैं बहुत ही ऊंचे मतलब सबसे ऊंचे लेवल की बात कर रहा हूँ, ना मैं नाम लूँगा ना कुछ वो करूँगा, बट इतना बता दूँ कि हमारे सिस्टम का सबसे बड़ा ऑफिसर था। उसको हम लोग थोड़ा ट्रेनिंग भी देते हैं ना, जब हम सीडीएम में कुछ काम करते हैं तो थोड़ा ट्रेनिंग भी देते हैं अपने स्टूडेंट ऑफिसर्स को, सो दैट उनको आदत पड़ जाए बड़े लोगों से बात करने की। तो हमारे एक नेवल ऑफिसर थे, वो उन्होंने उनसे सवाल पूछा कि सर ये कब तक होगा, ये जो जॉइंट कमांड वगैरह की बात हो रही कब तक होगी? तो उन्होंने बोला कि भाई आप बताओ, आप नेवी के ऑफिसर हो, किस तरह से आप नॉर्थ ईस्ट में जाकर के सीआई ऑपरेशंस करोगे? तो ये जो कहानी थी वो करीबन 20 साल पुरानी थी, अभी तक चली आ रही है। इस कहानी को जैसे कि बताया गया है कि हमारे जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है जो एनडीए के बाद खत्म हो जाते थे, एनडीए में जॉइंटनेस के बाद वो पूरा का पूरा जॉइंटनेस का सिस्टम हमारा गायब हो जाता था, उसको कंटिन्यूअस बनाना है। और कंटिन्यूअस बनाने के लिए जैसा कि बताया गया है कि स्टाफ कॉलेज हो गया, हायर कमांड हो गया, एनडीसी में तो कुछ मिलाप हो जाता है, लेकिन एनडीसी में बहुत कम लोग होते हैं जो कि एक्सपोज होते हैं, लेकिन अप टू हायर कमांड आई थिंक 80% जो है हमारी आर्मी और एयरफोर्स और नेवी एक्सपोज हो जाती है। तो उस हिसाब से इस तरह के जो सवाल हैं आने बंद हो जाएंगे। अगला सवाल जो है ऋषि आत्रे जी का है, ये बैंगलोर के हैं। Civil military relations involve the politicians, bureaucrat, and military officer. How do these three parts coordinate? Thanks. Again, किसी न किसी तरह से आपने आंसर किया है, बट दोबारा इसको रीइंफोर्स कर सकते हैं अगर आप चाहें। So, sir, it's a good way to see this is if we compare Pakistan, India, and China very quickly. Yeah. Pakistan is in a mess today because it could not sort out its civil military relations. Correct. China has gone towards fusion. PLA part of Huawei. So today, when Huawei is working on facial recognition projects, PLA teams are embedded into Huawei. Civil military fusion. Dual They are use. embedded into their mayoral economies. तो Yes. बीजिंग के मेयर के अंडर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोजेक्ट चल रहा है, पीएलए भी उसका फायदा उठा रहा है. और क्या आउटकम्स है मैंने आपको बताए विद दो स्टैटिस्टिक्स. इंडिया हैज ओवरकम द फर्स्ट फेज. वी हैव एक्नॉलेज्ड पॉलिटिकल कंट्रोल, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है. The salute and obey. Whatever the politician says will be done. But as I said, sir, let's be honest, the politician is leading today. वो कह रहा है चेंज कर दो. और ये जो ब्यूरोक्रेट और सोल्जर का झगड़ा था, ये सीडीएस डीएमए से समाप्त हो गया है. और it has reduced greatly. This much I can tell you. Okay, I think there is a question from Brigadier Bhatia. We have embarked on journey towards jointness. The biggest challenge is to train jointly. To evolve joint syllabus, a doctrine is needed. What are we in this evolving doctrine? Yeah, I think ये सवाल आप अच्छी तरह से आंसर कर सकते हैं क्योंकि आप आर्मी आर्मी कमांडर भी थे, तो इसके ऊपर ट्राई सर्विस लेवल पे क्या काम हो रहा था उसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी दे सकते हैं. तो सर जो डॉक्ट्रिन थी, बिफोर आई टुक ओवर, अ डॉक्ट्रिन हैड ऑलरेडी गॉन. सो आई हैड नॉट रियली वर्कड ऑन द डॉक्ट्रिन माय टेन्योर. बट आई कैन नॉट थिंक, मेरे टाइम में सर जो हायर कमांड था, आई यूज्ड टू गो वेरी ऑफन टू द हायर कमांड कोर्स. आई स्पोकन एट सीडीएम, कॉलेज ऑफ एयर वॉरफेयर, एनडीसी, हर जगह.
जो पूरा टॉक था वो जॉइंट था, पूरी सोच वाज जॉइंट, तो वो हो ही रही है. At that level, I don't think there is a problem. But I said, as you said, our track should become truly joint. It should be joint in terms of looking at strategic military futures. So we should be able to say that why we need to invest in persistent surveillance. How can we take innovation down to the field? ये जो आर्मी फ्यूचर्स कमांड का मैं उदाहरण दे रहा था, बड़ा अच्छा उदाहरण है. आर्मी फ्यूचर्स कमांड, when it was complaining in US कि साहब bureaucracy है ये वो, they created a 4-star whose job is to take innovation, drive it to the field. So what do? They send these cross-functional teams, which is service officer, scientist, domain specialist, ये वो. So they go to IPACOM. IPACOM gives them an operational brief. They come back and figure out that the technologies that are needed and drive it through. And whom are they collaborating? They were ordered to go to Austin, Texas, because it is the land of Elon Musk. Innovation का जो फिजा है वो आर्मी में आनी चाहिए. And they are collaborating with Carnegie Mellon, the topmost university in AI. तो आर्ट्रैक का स्वरूप इस तरह से बदलना चाहिए. More than doctrine, it should be looking at joint futures, at technology, innovation, concepts. Today, sir, it is not only say the science of space, it is the geopolitics of space that militaries must understand. The geopolitics of semiconductors. So in सब चीजों में जो है, RTRAC as a joint command, which means the CNC can be from the Navy, can be from the Air Force, and we have to drive this. यहाँ पर मुझे एक एग्जाम्पल भी कोट करना है, क्योंकि उसमें मैं खुद इन्वॉल्व था. मैं अमेरिका में करीब 1.5 साल के लिए था, एक नेवल पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल में. उनके पास 3-4 कॉलेजेस थे उसी के अंदर. इट वॉज लाइक यूनिवर्सिटी थी, जिसमें कि एक साइंस का अलग से डिपार्टमेंट था. मैंने इसमें एक्सपीरियंस किया कि जब अफ़गान वॉर चल रहा था, उस समय जब एक्टिव था 2007-8 में, एक दोबारा उन्होंने एक मुहिम छेड़ी थी. उस समय आर्मी के जितने भी सोल्जर्स थे वहाँ पर, वो तालिबानी स्नाइपर से मार खा रहे थे. एक आर्मी का मेजर एनपीएस में आया, साइंटिस्ट के साथ उसने 3 महीना काम किया. फिर ये पूरे साइंटिस्ट और वो आर्मी मेजर वापस गए उसी थिएटर में जहाँ पे तो थिएटर कमांडर ने, अफगान थिएटर कमांडर ने उनको ब्रीफ की. फिर वो लोअर लेवल पे गए, राइट अप टू द जो यूनिट होती है उनकी, जो स्ट्राइकर ब्रिगेड वगैरह होती थी, वहाँ उस लेवल तक गया वो. उसके बाद वापस आए, उन्होंने मॉडल नंबर 1 टू डिटेक्ट स्नाइपर्स विद इन 3 मंथ्स तैयार किया, उसको फील्ड किया. और वो मेजर साहब ने उसको चलाया वहां पे, गलतियां नोटिस की, वापस आया, एंड 6 महीने के अंदर ये सिस्टम तैयार. इस तरह का जो इनोवेशन है, एकेडमिया, फील्ड कमांडर, एंड जो आप नहीं मानोगे, इसमें एक डिफेंस एनालिस्ट था, वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट था, वो भी जुड़ा हुआ था इसमें. तो इतना जो अगर स्कोप आप लगा करके चल रहे हैं किसी डेवलपमेंट के लिए, आई थिंक इसकी ज़रूरत है. और ये हमारे आईआईटीज़ के साथ हो रहा है. आरआरयू के साथ भी मेरा एक एक्सपीरियंस, मैं वहाँ पे था, कुछ दिन जॉब किया, कुछ कारण से मैं वहाँ से आ गया. तो वहाँ पर भी इस तरह की जो रियल टाइम इनोवेशन चल रही हैं. आई थिंक दैट्स द वे फॉरवर्ड. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ इसकी, और से बड़ी अच्छी गजब की मिसाल है. यूएस स्पेसकॉम का पार्टनर टुडे इज एलॉन मस्क. Elon Musk, because of the efficiencies of startups, has pushed Boeing out of business. NASA is doing exploration. The US Spacecom, जब वो setup हो रहा था, their 4-star said, he was briefed that, sir, we need a procurement vertical. So he said, I just said कि उसमें इतने ऑफिसर उन्होंने लगा दिए थे. He said, I hopped across to SpaceX and I asked Musk's engineers कि how do you do your procurement? Do you have a vertical? So they looked at him puzzled. They said, what are you talking? So he said, no, how do you do your procurement? He says, what our launch engineers want, we give a list and the items come. Now see, this is how government organizations will create structures, verticals. And this is how startups are flexible. So that is why we need to marry up with startups and all these. And जरूरी नहीं कि हर बार हम सक्सेसफुल हों. बिल्कुल. आप 100 बार फेल होंगे, एक बार सक्सेसफुल होंगे. वो पेशेंस होनी चाहिए हमारे. This is such an important point. This is cultural transition. So Musk says, fail
early, fail many times. उसने जो अभी ये जो Yes, launch कर रहा है this spaceship, he has declared that between now and 1st January, I will do 4 tests and I will fail in all 4. yes, DRDO, ISRO cannot do that. They have to make that perfect launch because people will talk. That is the culture. Early prototyping, quick failures, and orders. तो ये जो सारी, sir, the financial setup has to change. The IFAs have to learn how to fund failures. yes. So, जो वो cultural transitions हैं, they are also important. और ये स्टार्टअप्स का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत खुल के बाहर आया कि भाई हम जरूरी नहीं कि सक्सेसफुल हों, लेकिन हमारे पास फंड सपोर्ट नहीं है, हमारे They पास are absolutely इंटेलेक्चुअल right. कैपिटल है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, बट जरूरी नहीं कि हम हर बार सक्सेसफुल हों। तो हमारे को कुछ रियायत मिलनी चाहिए कि अगर हमने कुछ, आपने हमको फंड किया है तो उस फंड को संक कॉस्ट में डालने की, संक कॉस्ट बोलते हैं, जो कि अगर कोई आपने काम किया और वो काम सक्सेसफुल नहीं हुआ तो जितना भी पैसा लगा है वो चला गया गड्ढे में, तो इसीलिए इसको संक कॉस्ट बोलते हैं। इस तरह की झेलने की ताकत हमारे में होनी चाहिए। वो तभी होगा जब हमारी इकोनॉमिक स्ट्राइड जिसकी बात करते थे आप, वो आगे बढ़ती रहेगी, जिसमें इस तरह की झटके झेलने की ताकत हो। 16 आने वाली बात की। इसमें एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो जनरल चतुर्वेदी जी ने किया, जो कि आजकल पूरे हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस में फैला हुआ है, मतलब आग की तरह फैला हुआ है। तो इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? एयर फोर्स फील्स दैट थिएटराइजेशन वुड रिजल्ट इन फ्रिटरिंग अवे ऑफ एयर एसेट्स। प्लीज कमेंट। इट्स आई मीन इसमें ऐड करता हूँ कि ये टाइम नहीं है हमारे को थिएटर कमांड्स बनाने का। अगर बनाना है तो आप एक इंडिया का थिएटर कमांड बनाइए, और इंडिया पूरा एक थिएटर कमांड बनाइए, और एक दूसरा एक मैरीटाइम बनाना चाहते हो मैरीटाइम बना दीजिए। ये उनकी एक स्टार्टिंग पोजीशन है, और ये काफ़ी हाई लेवल तक की बातचीत है। इसके ऊपर आप कुछ बोलिए। तो इसमें सर जो भी एयरफोर्स की संवेदनाएं हैं, वी मस्ट एंगेज विद देम, बट आई गिव यू 2 व्यूज ऑफ माय ओन। हम्म, अभी सर ये डील हो रही है GF14 की। दे विल या पावर 250 ऑफ योर LACs, LCS Mark II. यस, So now assets will increase. So assets is not the issue. अच्छा, आज की हालत में assets कम है. So assets are still distributed. They are distributed to Western Air Command, Eastern Air Command, but ये they are बात not समझ, frozen. They are not ये बात frozen. समझ, यार ये They can समझते move. नहीं है, दे आर शिफ्टेड, बाद में भी अच्छा, शिफ्ट हो सकते but हैं। Air Force should not bother about this. Air Force should see how other air forces are evolving into better combinations of unmanned and manned systems. एब्सोल्युटली, दैट वाज द पॉइंट, द वॉरफेयर इज चेंजिंग। Cool. तो ये this is one argument. Look at the other arguments. You, for example, sir, ये जो 31 predators आ रहे हैं, अब people हाँ say जी, Air Force, Navy, they will go to the concerned theater. They will go to यस, the maritime theater. They will go to the northern theater. They will go to the western theater, where they can be a naval boss, they can be an air boss. So these एक arguments are steadily losing their sheen. अब देखिए, अब डोकलम के टाइम पे P8I, उस समय मैं चीफ ऑफ स्टाफ था ईस्टर्न कमांड में, हमने P8I यूज किए चाइना बॉर्डर पे। तो कहने का मतलब है जहां जिसकी जरूरत है हम इस्तेमाल करेंगे। रास्ता थोड़ा लंबा हो जाता है, हम इसको बोलते हैं उसको बोलते हैं, करते 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 थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन शिफ्टिंग ऑफ रिसोर्सेज शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। तो मेरे ख्याल से ये Air आर्ग्यूमेंट, Force has natural expertise in space. या एब्सोल्युटली, The game is shifting to outer space. I'm sure the Air Force is focusing on this. These are the या issues which are more relevant. ओके। वी हैव one more question. Reader Sandeep Kumar: cyberspace is a domain which needs urgent attention while theaterizing organization. बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आई थिंक वी लीव इट एट दैट, इट्स अ पॉजिटिव कमेंट। इनफैक्ट ये जो साइबर स्पेस वगैरह की जो हम बात करते हैं, ये एक एडिशनल टूल्स बन जाते हैं, और इनको भी, जैसे वो मल्टी डोमेन कमांड की बात की थी ना आपने, ये जी सारी हाँ। चीज़ें उस मल्टी डोमेन कमांड के अंदर आनी चाहिए, ताकि उनको भी एक सिनर्जाइज करके अपने अपने वेरियस थिएटर्स में जहाँ भी जरूरत और हो मैं वहाँ सर लगाइए। मैं एक बात बोलूं, हम्म, today a northern theater commander will have it easy, but this gentleman who commands the multi-domain command, he is going to have huge challenges. ह्यूज वहाँ ह्यूज असली ह्यूज। प्रोफेशनल चैलेंज है।
आप देखिए सर, now once again look at these Chinese. The Yeah. SSF combines space, EW, and cyber. They are talking of integrating the three. We also should see in this multi-domain command now we should not have space, silo, EW silo, cyber silo. It has to Correct. integrate all these technologies. What matters is the capacity at the end of the day. Persistent surveillance, precision read, the capacity matters. Yes, sir. There is one more question. Again, it's a very common question, but just allay his fears. One issue with the CDS is fear of dominance by the army and bogey of coup. Would it be a good idea for CDS and CIS? I think India has proved over and over again that this coup business is definitely out of question. अगर लोगों को अभी तक नहीं समझ में आया तो आई डोंट थिंक लोग आएगा For बाकी आप ये 70 years, we have coup-proofed the armed forces. There is एब्सोल्युटली certainly no danger on that account. जहाँ तक फियर ऑफ डोमिनेंस की बात है आर्मी की ओवर थ्री सर्विसेज आई डोंट थिंक वो भी रहेगा आप देखिए जैसे स्ट्रेटेजिक सपोर्ट कमांड है या फिर अंडमान निकोबार कमांड है धीरे धीरे इवॉल्व हो गई आर्मी वाले भी जाते हैं एयरफोर्स वाले भी जाते हैं नेवी वाले भी जाते हैं तो मेरे ख्याल से आई थिंक वी आर इवॉल्विंग इन द राइट डायरेक्शन डेमोक्रेसी में थोड़ा इस तरह की चीज़ें होती हैं अब हम चाइना तो बन नहीं सकते ना कि भाई जो जो चाइना जो बोलता है हमको कि जो काम आप 10 साल में करते हैं हम 1 साल में करके दिखा देते हैं वो उनका सिस्टम है हमारा सिस्टम है पक के बाहर निकलता है और तो हमारी क्या करें ethos देखिए सर कितनी सुंदर है. Field Marshal Manekshaw said, "We are deeply politically conscious, but consciously not politically committed." आई मीन ये तो बहुत बड़ी विचार उन्होंने व्यक्त की थी उस जमाने में फिर भी लोग समझे सवाल ही नहीं नहीं थे है, दुनिया में एक बार सोच भी हो इस टाइप की है. फिर भी लोग समझे नहीं थे उनको उनसे लोगों को डर ही लगा रहता था बिकॉज ऑफ हिज पर्सनैलिटी बट दैट्स अ डिफरेंट इशू विल नॉट टॉक अबाउट इट ओके there is another one. Our track is based in Shimla. Naval Doctrine Unit is Mumbai. Air Force Doctrine Branch is in Air Headquarter and COS Secunderabad. Should the IDS Doctrine Branch be in DSSC Wellington to give a peninsular view? अब ये इस पे आप क्या कहना चाहेंगे मेरे ख्याल से जगह का तो महत्व खत्म हो गया है आज के डिजिटल एरा में जगह से कोई लेना देना ही नहीं रहेगा इतनी अब आज ही देख लीजिए हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं आप दिल्ली में हैं मैं लखनऊ में है ये हमारे जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो बैंगलोर में हैं तो कोलैबोरेशन तो हो ही रहा है आप देखिए कितना बढ़िया कोलैबोरेशन हो रहा है So I don't think this is a problem at all. Once we decide, भाई हमको सहमति इस पे बनानी है कि do we need a command which thinks joint, which looks jointly at the futures? अगर उसमें सहमति हो गई ये छोटी छोटी चीजें will fall into place. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें सहमति बनानी. और एक मैं आपको बहुत ये जो डायलॉग है सर ये जो डिफरेंसेस हैं बड़ा अच्छा हिंदी का वाक्य है. I heard it from somebody which says असहमति का साहस और सहमति का विवेक, the wisdom to agree and the courage to disagree. अगर हम ये कर लें अपने jointmanship dialogue में, while we must disagree, we must also know when to agree. yes The wisdom to agree. We will, and see, people talk so highly of the armed forces. मेरा ये कहना है, today is the time for everybody in the armed forces to show statesmanship. The country needs it. Statesmanship to look at the futures in a very integrated nationalistic way. एक और पुराना क्वेश्चन है किसी ने पूछा है मेरे हिसाब से रेलेवेंट है लेकिन उस पे अगर आप अपना कुछ विचार व्यक्त करें तो ठीक रहेगा हम बात करते हैं कि हमारे पास एक स्टेटेड नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी नहीं है तो इसके ऊपर क्या करना चाहिए व्हाट शुड बी द वे अहेड क्या हम अभी भी आरएम डॉक्ट्रिन के ऊपर ही आरएम डायरेक्टिव के ऊपर ही चलते रहेंगे 2013 में जो ड्राफ्ट बनी थी वो भी हमने ही बनाई थी आई थिंक आईडीएस ने बना के भेजी थी तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर So let's examine this. Is a very good question. So let's examine it very dispassionately. तो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी पहली बात तो मैंने सुना एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बन रही है. आई हैव बीन हियरिंग अबाउट दिस. इट्स बीइंग फॉर्मुलेटेड. जनरल दुआ ने बोला था कि मैंने बना के भेज दी है ये इतना तो मुझे भी पता है
उसके बाद मैंने सुना है लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक कि कुछ हो रहा है. But the other thing, sir, what is the utility of this? So look at the Americans. They have a AI strategy, they have a defense strategy, they have a national security strategy. और वो बहुत सुंदर लिखते हैं. अभी आप देखिए साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी उन्होंने लिखी है. Very well written. That is one thing we must do. This the services can do. But आप देखिए the larger issue, and this we must see. The Chinese have no written strategy. The Chinese spoke of a 100-year marathon. Matlab, sir, Chow and Lai and Mao went to Roosevelt and Marshall and said, give us money, give us weapons, give us technology, we'll become like you. ये कम्युनिस्ट पार्टी नहीं रहेगी. 1949 में 100-year marathon. इन सब के जहन में ये था धीरे धीरे करके हमको यूएसए को की बराबरी करनी है. हाइड एंड वाइड, लाउड एंड प्राउड, ये स्ट्रेटजी उनके जहन में है. सो आई एम सेइंग हैव अ स्ट्रेटजी, बट इफ यू आर पुअरर इन एग्जीक्यूटिंग द स्ट्रेटजी, द अमेरिकन्स हैव बीन पुअरर देन द चाइनीज. What is more important to have this strategy? For example, sir, somebody like me or somebody like you, if we don't have a strategy in our head, we don't deserve to be here. I have a strategy in my head. I know what is to be done. Yeah. And we must pass it down. So we can have a written model, but a written model is no guarantee. The larger thing is that execution matters more. Yeah. Somebody put a very good question, which all democracies must see. They say open society, closed minds. Closed society, open minds. How are closed societies thinking better than you? Acting better than you? China is authoritarian, but it is meritocratic. So, see, this is one very good thing of the Indo-US visit in my. These are game-changing agreements. Yeah. And why they are game-changing? Because China always says, listen, democracies debate, they talk, we deliver. Yeah, this time we are signaling that we will also deliver. तो ये सारी changes आनी है, strategizing, thinking, very important. पॉइंट बिल्कुल वैलिड है. नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी होनी चाहिए. इसको बनाया भी जाता है एट सम लेवल. इसको जानबूझ के कुछ कंट्रीज डिस्क्लोज करती हैं, कुछ कंट्रीज डिस्क्लोज नहीं करती हैं. अमेरिका रेगुलरली करता है, उसको रिव्यू भी करता है. अमेरिका का जो तरीका है वो हर प्रेसिडेंट आकर के अपनी एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनाता है, क्योंकि वहाँ पे जो सारी गाइडिंग ऑफ द रूल जो होता है वो प्रेसिडेंट के हिसाब से होता है. जहाँ तक इंग्लैंड का सवाल है, हर 2-3 साल पे वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को रिव्यू करता रहता है बेस्ड ऑन चेंजेस विच हैपन. कई लोग, जैसे आपने बताया कि चाइना के पास कोई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी नहीं, लेकिन वो वाइट पेपर जरूर निकालता है जिसमें कि वो अपनी जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो ज़रूर उसको शामिल करता है. तो वो भी एक तरीका है. और दूसरा चीज़ जो चाइना बहुत बढ़िया करता है, ये मैं शेयर करना चाहता हूँ लोगों के साथ, कि कभी कभी वो थिंक टैंक्स को कमीशन करता है किसी चीज़ पे, या तो बुक लिखने के लिए या रिपोर्ट लिखने के लिए, और उसको यूज़ करता है अपने काम के लिए. तो ऑफिशियली वो नहीं है सपोर्ट में, बट अनऑफिशियली वो कर रहा है. तो ये भी एक तरीका होता है. You have hit the nail on the head. We need a strategy. More than strategy, we need to develop a culture of strategic cunning. In international affairs, there has to be strategic cunning. जो चाइना बड़ी खूबी से करता है. Gen Raj Shukla, we had a fantastic discussion. I think possibly the best discussion we have had till now on the Strive dialogue. बहुत ही बढ़िया डिस्कशन रहा. और जो कमेंट्स हैं, अगर मैं उनको फ्लैश करने लगूंगा, आपको मैं सिर्फ एक ही करता हूँ. जनरल परमार हमारे चेयरमैन हैं, उन्होंने एक कमेंट दिया है. जनरल कक्कड़ ने कमेंट किया है. जनरल कक्कड़ ने एक क्वेश्चन भी पूछा है, अगर आप बोलना चाहें तो उसके बारे में बता सकते. So I must flash his question. With theater commands, do we need to integrate at core or command levels? ये इनका एक सवाल है, क्योंकि ये भी इस पे काफ़ी काम कर चुके हैं थिएटर कमांड्स पे. जब सेंट्रल कमांड से हम प्रेजेंटेशन के लिए जाते थे ये लोग, तो हम लोगों से थोड़ा राय विचार लेते थे सेंट्रल कमांड. So I think, sir, the strategic integration will happen at the command level, and the operational integration will happen at the core level. And so, say now when we talk of operational integration, now we have to see: do we still need air army components, or do we need, say,
in the air component, manned systems, unmanned systems. What is the level of AI integration that we need in our uh, army field formations? You just see, sir, as General Kakkar is a gunner. The single most game changing thing that has happened in Ukraine is precisionry. So if in our theaters we can bring about precisionry, because the days of artillery straddling targets is over. So more than those structural integrations at the field level, this is what we need. But the broad answer is that strategic integration will be at the command level, in my view, but the operational integration will be at the core level. Yeah. So that leaves me to give the comment of our chairman, Major General Avi Parmar. He used to be my GOC when I was battalion commander in 4 Infantry Division. My compliments to General Dushyant and General Raj Shukla, Thank you, both sir. for. Deeply humbled, humbled, absolutely humbled. And next, I'll flash the comments of General Chaturvedi, who is our vice chairman. Overall, a terrific conversation. My compliments to General Shukla for clarifying all that is needed to make an armed forces ready for defense strategic interest rather than threats to our national security. He has reinforced the point which you have said, and that leaves me now just to thank you for a Great pleasure. wonderful discussion. We will trouble you in future as well, and Great honors. you will get some real professionals joining this particular dialogue so that we have meaningful questions. Thank you very much, Jahind, and Thank till you, the sir. next time. Greatly honored. Thank you for calling me. I Thank you. enjoyed it. Thank you, sir. Thank you. Bye, sir.